Good morning. Welcome to the session. The topic I'm going to talk about is general awareness. General awareness basically consists or is divided into 4 or 5 parts. You have your history, geography, polity, economics, then famous books, personalities. All this is divided into miscellaneous. Okay. I will be talking about the history part. Now, as you may know, history again is divided into 3 to 4 subsections. Ancient history, which is taught to students in 6th class. Medieval history, which is taught to students in 7th class. Modern history, which is taught to students in 8th class. Then in 9th and 10th, you move on to study world history. Today, we'll be talking about the general awareness of the questions regarding history. आपके जनरल अवेयरनेस को 4-5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से इतिहास का, पॉलिटी का, राजनीतिक विज्ञान आप जिसको बोलते हो, ज्योग्राफी भूगोल का, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि फेमस पर्सनालिटीज हो गया, आपके बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए और जनरल साइंस, बेसिक विज्ञान जो 10th क्लास तक आप पढ़ते हो, ये चीजें सारे आपके जनरल अवेयरनेस में पूछी जाती हैं, जो जनरल अवेयरनेस का आपका सेक्शन होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम का। ओके, मैं आज हिस्ट्री की बात करूंगी। हिस्ट्री को मैंने बताया फिर 3-4 भागों में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, देन मध्यकालीन भारत, आपका मेडिवल हिस्ट्री, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, अब चलो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। I'll just wait 1 minute. I'll share my screen. Yes, I hope you all are able to see. So these are the few questions which we will study today. The first question regards Battle of Plassey. The Battle of Plassey was fought in 1757, 1782, 1748 and 1764. As you can see, for now, for this first question, मैंने आपको already आंसर आपको दिखा रखा है, ठीक है? Option A, Battle of Plassey, 23rd June 1757, was a decisive British East India Company victory over the Nawab of Bengal and his French allies, establishing company rule in South Asia, which expanded over much of the Indies for the next 190 years. The battle took place at Palashi, Bengal, on the river of Bhagirath, about 150 kilometers north of Calcutta, near Murshidabad, then capital of individual Bengal. The belligerents were Sirajuddaula, the last independent Nawab of Bengal, and the British East India Company. अगर आप देखोगे इसमें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक और कोलेशन में थे, साथ में सिराजुद्दौला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही आपके जो एंट्रेंस एग्जाम में कॉमन क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, and you have to attend those. Now I am not saying that only these specific questions will come, but ये questions एक example है, ठीक है? The next question, the territory of Porus, who offered strong resistance to Alexander, was situated between the rivers of. ये क्वेश्चन बात करता है आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये हिस्ट्री आपकी है एंशिएंट हिस्ट्री, 6th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? आपका इसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट, अगर आपको याद हो, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम अलेक्जेंडर द ग्रेट स्टार्टेड इन्वेडिंग इंडिया। तो ऑप्शन ए सतलुज एंड बेस, ऑप्शन बी झेलम एंड चेनाब, option C Ravi and Chenab, and option D Ganga and Yamuna. Let's see the answer. It is option B Jhelum and Chenab, sorry. Third, under Akbar, the Mir Bakshi was required to look after. Option A, Mir Bakshi was one of the generals of Akbar. Military affair. Option B, the state treasury. Option C, the royal household, and option D, the land revenue system. Let's see the answer. Option A, the head of the military was called Mir Bakshi, appointed from among the leading nobles of the court. The Mir Bakshi was in charge of intelligence gathering and also made recommendations to the emperor
for military appointment and promotion. We move on to next question. Tripitakas. Tripitakas are sacred book of A. Buddhist, B. Hindus, C. Jains, and D. None of the above. I don't know how much familiar you are with your history, right? But Tripitaka जैसी common चीजें हैं, these belong to Lord Buddha, Gautam Buddha. The books. Option A. Okay. Now, next come to the next question. The trident shaped symbol of Buddhism does not represent. अच्छा बच्चों, एक गलती जो बच्चों से या एस्पिरेंट से हो जाती है, क्वेश्चन को वो जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, तो वो ये नहीं देखता कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, डज रिप्रेजेंट या डज नॉट रिप्रेजेंट. जनरली हमारा दिमाग द ट्राइडेंट शेप सिंबल ऑफ बुद्धिज्म रिप्रेजेंट, अच्छा ट्राइडेंट शेप के बारे में पूछा है, तो इनमें से क्या है. आगे चल के बच्चे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते पूरा, तो आप लोग जब अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो अच्छे से आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसी के बाद आंसर्स पे जाना. ऑलराइट. ए निर्वाणा, बी संघ, सी बुद्धा या डी धर्म. द आंसर इज ए निर्वाणा. ट्राइडेंट, ट्राइडेंट होते हैं थ्री, जैसे शिव जी का त्रिशूल अगर आपने देखा उसको ट्राइडेंट बोलते हैं. थ्री, ट्राई, ठीक है. डज नॉट रिप्रेजेंट, निर्वाणा को वो रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली इसका क्या मतलब हुआ, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, संघ, बुद्ध और धाम. ठीक है. we'll move on to the next page. The theory of economic drain of India during British imperialism was propounded by A. Jawaharlal Nehru, B. Dadabhai Naoroji, C. R.C. Dutt or D. M.K. Gandhi. The answer is Dadabhai Naoroji, B. The drain theory, economic of drain. इसमें दादाभाई नारोजी, what did he explain, what he wrote in this theory was basically explaining how Indian economy was badly affected with the advent of Britishers. अंग्रेज जो आए वो हमारे ही रॉ मटेरियल हमसे ही चीप रेट पे खरीद के इंग्लैंड एक्सपोर्ट करके वहां पे फिनिश प्रोडक्ट बना के डबल प्राइस में उसी प्रोडक्ट को भारत में बेचना और ये मजबूर करना इंडियन ट्रेडर्स को कि वो उसे ही परचेज करें. ये उन्होंने इकोनॉमिक ऑफ ड्रेन में बताया था. ऑलराइट. 7. द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टा वाज साइंड बिटवीन टिपू सुल्तान एंड रॉबर्ट क्लाइव, Cornwallis, Dalhousie and Warren Hastings. These all are viceroys and governor general of British India. The option is B. Cornwallis. Next question. The system of competitive examination for civil services was accepted in principle in the year. एक और ध्यान देने वाली चीज है, वो आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, in principle. It is not asking you about when it implemented, but it is asking you when was this accepted in principle. So this thing needs to be very clear that it is asking for in principle. इसका मतलब मन से या एक उद्देश्य में कब बोला. जैसे हम लोग किसी चीज की प्लेज लेते हैं, आज से मैं गंदगी नहीं करूंगा, ठीक है, इन प्रिंसिपल का वो मतलब होता है, पर एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये दो अलग चीजें हैं. ओके. तो ये छोटे छोटे टेक्निकलिटीज का आपको ध्यान में रखना है. A 1833, B 1853, C 1858 and D 1882. The answer is option B, 1853. Ninth question. Through which one of the following the king exercised his control over village in Vijayanagar Empire? Again relating to ancient India. Danakya, Sumanta, Nayaka या Mahanayakacharya. The answer is D, Mahanayakacharya. Vijayanagar Empire, ancient India में ये flourish करे. The Vijayanagar ruler Krishna Dev Raya's work Amukte Malayada was in Telugu, Sanskrit, Tamil या Kannada. The option is option A, Telugu. So students, what you have to see, these are just few examples. It is not कि exactly यही questions आएंगे, ये कुछ example है. और general awareness की history एक part है. General awareness itself is, जैसे कि मैंने बताया, 4-5 sections में divided है. तो आप लोगों को हम जो practice करा रहे हो exact ये questions नहीं, पर ऐसे questions आ सकते हैं. गूगल से बुक से आपको देखना है जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो. हाँ, मैं आपको थोड़े चीट कोड्स बता रही हूँ, थोड़े हैक्स जैसे कि कैसे अटेम्प्ट करना है. पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना आंसर नहीं देना.
ऑलराइट, अच्छे से आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर देना है। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि उन्होंने पूछा कि इन प्रिंसिपल में सिविल सर्विसेज कब अडॉप्ट करा गया था, रियलिटी में नहीं, इन प्रिंसिपल। तो बच्चे क्या होते हैं, इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। ओके, next come, under an agreement with which of the following countries did Subhash Chandra Bose organize the Indian soldiers taken as prisoners by the Axis power into the Azad Hind Fauj? China, Germany, Italy, and Japan. The answer is option D, Japan. All right. The next question, this is world history relating to World War and Cold War, and even in modern history, this can come relating to independence. 12th question. We hear of two envoys being sent to the Roman kings, one in 27 to 28 AD to the court of Augustus, and the other in 110 to 20 AD to the court of Caractacus, Trajan, Nero, or Brutus. The answer is B, Trajan. This is world history again, and the ancient history of the world, the Greeks and the Roman. This particular question is from the Roman Empire. 13. The use of Kharosthi in ancient Indian architecture is the result of India's contact with Central Asia, Iran, Greece, or China. The answer is option C, Greece. 14. Vaikhansa, the five-fold conception of Vishnu consists of Brahma, Purush, Prakriti, Satya and Achyuta, Aniruddha. अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन दिए होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 में से चुनो, पर इतने सारे कॉम्बिनेशन है, आप इनमें से सिलेक्ट करो। जैसे इसका आंसर है हमारा डी, 1 3 4 5 एंड 6, दैट मीन्स सेकंड पुरुष इज नॉट द राइट ऑप्शन। ओके, next is the troops raised by the emperor but not paid directly the state and placed under charge of mansabdars were known as Walashahi, Baravardi, JC Kumaki, or Dakhili. The option is Dakhili, option D. This is a mansabdari system flourished under Akbar. Okay, all right. So that's it for today. Basically, there would be no use of sharing different questions, practicing, right? Because you can also practice these questions. What is important is for you to know the tricks which you can use in your exams. I wish you all the best. Thank you.